भी स्टडी किया था, ठीक है, that was an RTD problem, ठीक है, and in which we saw how error or uncertainty propagates through our calculations, ठीक है. The next, okay. So we did example 8.2 in our previous lecture, and example 8.3 is repetition of the same lecture, except now the uncertainty in the resistances is 0.1% instead of 1%. And we do the same calculation again to find out if uncertainty in the measure temperature is equal or less than 0.5 degrees C. Okay. For 1%, the uncertainty in temperature is not equal or less than 0.5%, so it doesn't satisfy this condition. Therefore, if we want uncertainty in measure temperature to be less than 0.5 degrees C, equal or less than 0.5 degrees C, we cannot use 1% uncertainty for our resistances in the Wheatstone bridge. So we repeat the same calculations with 0.1% uncertainty of resistance values of the resistances in our Wheatstone bridge, and do the same calculation again, and this time we find out that the uncertainty in measure temperature is 0.0433 ohm, which is less than 0.5. Oh, this is uncertainty in RTD. Okay, so we have to do the further calculations, but I think if we use 0.1% value in this example, we do meet the uncertainty in temperature condition. Okay. Do you have any questions, students? Students, I need some response. Okay. Okay, so let's move forward. Advantages of RTDs over thermocouple. So this slide seems like misplaced in the presentation because we haven't studied thermocouples yet. But anyway, let's go over them. It has higher EMF output, greater sensitivity and accuracy, greater signal-to-noise ratio, allows for longer lead bars. Okay, we will do this slide after we study thermocouples. So let's move to the next slide, and we will start electric resistance thermometry. And our topic is thermistor, which is thermally sensitive resistor. So what is a thermistor? Thermistors are ceramic-like semiconductor devices. Typically, thermistors are NTC devices. Our resistance decreases rapidly with temperature. Okay, so as a thermistor, if we use a thermistor as temperature measurement instrument, and as you can see from the curve of the thermistor, as the temperature increases, the resistance of the temperature of the thermistor decreases. So that's why we call this type of instrument as a NTC instrument, which is negative temperature coefficient device. The functional relationship between the resistance and temperature is R is equal to R naught e raised to the power, or e raised to the power beta into 1 over T minus 1 over T naught. Again, R naught and T naught are reference temperature given in the data sheet of the thermistor, and beta is the coefficient of the thermistor. Okay, that is all, whose values are also given in the data sheet of the instrument. So
The one thing you need to know about this formula, compare it to RTD formula, where R is equal to R naught into 1 plus alpha into T minus T naught. Okay, compared to this formula, you can see that this whole term, beta into 1 over T minus 1 over T naught, is e raised to the power. Okay, so it's an exponential relationship. And because of that, since, as you can see, this curve is exponential, and because of that, the change in resistance is significant. Okay, if we have the same delta T, T minus T naught, T minus T naught, if we have the same value of T and T naught for both the equations, okay, the change in resistance in this formula, which is the thermistor formula, will be significantly higher compared to change in resistance or resistance change for this one. What I'm trying to say is that because of the exponential nature of the thermistor formula, okay, the resistance value will change greatly. Okay? As you can see here in the graph, the resistance value changes from 0.001 to 0.01 to 0.1 to 1. So it's this one division is actually is a logarithmic scale or an order of one difference. Okay? इस बात की समझ आ रही है students? Someone? Salman? Salman? Wakas? अच्छा, मुझे ये बात बताएं, दो फार्मूले, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फार्मूला, दूसरा हमारे पास जो है आरटीडी का फार्मूला, विच इज आर इंटू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट. ठीक है, अगर इसमें मैं पहले टी की वैल्यू और लेट्स सपोज 25 डालूं और टी नॉट की वैल्यू मैं 0 डाल दूं दोनों इक्वेशंस में, और फिर टी की वैल्यू में लेट्स सपोज 50 डाल दूं और टी नॉट की वैल्यू सेम 0 रहे. ठीक है, यानी दो, पहले ये वैल्यू इसमें डाल दूं फिर ये वाली वैल्यू भी इसमें डाल दूं, तो मेरे पास दो वैल्यूज आर की आ जाएंगी. आर, ठीक है, ठीक है, हम आर ए कह देते हैं, आर बी कह देते हैं. इसी तरह अगर ये टी और टी नॉट की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डाल दूं और मेरे पास आर ए की वैल्यू आ जाए और फिर ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल दूं तो आर बी की वैल्यू आ जाएंगी. ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस ऑफ आर ए एंड आर बी, ठीक है, इनको मैं कह देता हूं आर टी डी और इनको मैं कह देता हूं थर्मिस्टर. किस आर ए और आर बी थर्मिस्टर की वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा होगा या आर ए आर बी आर टी डी की वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा होगा? वकास, क्यों ज्यादा होगा? जी बिल्कुल सही. तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहें ना, इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों कह रहे हैं? यू आर टोटली राइट, बिकॉज इससे एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, तो आर ए और आर बी में डिफरेंस फॉर द थर्मिस्टर की वैल्यू में डिफरेंस ज़्यादा होगा कंपेयर टू आर टी डी के आर ए और आर बी की वैल्यू में जो डिफरेंस होगा. ठीक है, सबको क्लियर है? शुड आई मूव फॉरवर्ड विद दिस पॉइंट? दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज दैट tells you, because of the exponential nature of the thermistor calibration curve, that tells you that thermistor is has a higher sensitivity compared to RTD. ठीक है, for the same change of input temperature, the change of resistance of thermistor is very high compared to change of resistance of RTD.
Okay. So next is the parameter beta ranges from 3500 to 4600 Kelvin. Typically, the beta value is specified to be constant by manufacturer for a sensor over a limited range. Okay. What they're saying is that even though beta value changes for a single curve, but for a limited range of temperature, the beta is assumed to be constant for a single curve. For another curve, the beta will be different. So what this bullet is implying is that even though beta value changes or we can say that beta is a function of temperature. So even though beta is a loose function of temperature and beta value changes as temperature changes, but the manufacturers will basically specify a limit on a thermistor device for which beta is assumed to be constant. And why is it assumed to be constant? Because the variation of beta is negligible or is very small, and we can ignore that variation and we can assume beta to be constant. Okay? So typically, when you get a thermistor, each thermistor will have a single beta value. And so one thermistor might have a single beta value, which will be different from another thermistor, which of course will have, if it's a different thermistor, it probably will have a different value of beta. Now, electrical thermistor has higher sensitivity, we discussed it in the previous slide. It is rugged, encapsulated in glass. It is typically encapsulated in glass. It's a fast response instrument, unlike RTD. So basically, we are comparing this to RTD. Relatively, thermistor has higher sensitivity compared to RTD. It is yeah, you can say it's more rugged than RTD, but RTD can also be rugged. Means they can be. We can also encapsulate RTDs, but typically we will say that thermistor is more rugged than RTD. It is fast response. RTDs are not a fast response device. So thermistor is a fast response device. The high resistance of a thermistor compared to that of an RTD eliminates the problem of lead wires and limited temperature measurement range. So there is one drawback of thermistor compared to RTD. Since we assume beta is to be constant over range of temperature measurement, since beta is a function of temperature, so we can only assume beta to be independent of temperature, or we can assume beta to be constant for only a small range of temperature measurement. Okay? That limits the application of thermistor for a wider range of temperature compared to RTDs. One of the other issues is aging of the thermistor sensor. Okay. So what is aging? So if you use a typical thermistor, if you use it for temperature beyond 200 degrees C, and especially if you use it for prolonged periods, then it will no longer its parameter changes, means it's no longer behave, or simply put it like this, that if you use a thermistor for temperature measurements, typically if you use a thermistor for temperature measurement beyond 200 degrees C, then after a certain time you will need to replace it because it will no longer provide accurate measurements. So in a nutshell, a thermistor have higher sensitivity. It has fast response.
since it has higher resistance, means R naught values, since it has higher resistance compared to RTD, therefore you typically don't have to worry about lead resistances in your measurement. ठीक है, इस बात की समझ आ रही है दानियाल? दानियाल 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 अहमद? जी सर। Daniel, a higher resistance of a thermistor compared to an RTD eliminates the problem of lead wires resistance. इसका क्या मतलब है? कुछ अंदाजा है? Guess Sir, करो. I have just sorry, I have just joined recently, अच्छा, 5 to ठीक है. 6 seconds ago. तो ठीक है, चले हम पूछ लेते हैं. फजल रहमान. फजल रहमान. जी सर. जी, आप कैन यू एक्सप्लेन दिस बुलेट जो कि मैंने टिक किया हुआ है? आपको कुछ अंदाजा है? सर ये समझ नहीं आया सर. अच्छा, इसका मतलब ये है कि देखें, अगर आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, फजल रहमान अपने माइक म्यूट ना करें, वी आर सही है सर. ठीक है. अगर आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज है और लेट्स सपोज मैं उसमें आरटीडी कनेक्ट करता हूं, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज जी सर. R2, ये जो है मेरा आरटीडी, ठीक है. Now let's suppose RTD R naught value is equal to, let's suppose, let's use a 25 ohm. R naught value of 25 ohm. And this is 25 ohm and 25 ohm and 25 ohm. Even if it's RTD might have smaller value, but if you're using a very long lead wires, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो एक कमरे में पड़ा हुआ है और जो आरटीडी है उसको आपने दो वायर्स की मदद से कनेक्ट किया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज से, लेकिन आरटीडी जो है वो एक दूसरे कमरे में एक फर्नेस के अंदर जो है, ठीक है, फर्नेस में आपने कनेक्ट किया हुआ है. अब जो आप कंडक्टर वायर्स यूज कर रहे हैं, जाहिर है उनका, दीज आर कॉल्ड लीड वायर्स, तो जाहिर है इनका अपना भी तो रेजिस्टेंस होगा ना, ठीक है. तो देन यू विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट, क्योंकि अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान सिर्फ 25 ओम रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो है 25 ओम प्लस हो सकता है ये आप जो लॉन्ग वायर्स यूज कर रहे हैं वो 1 ओम. तो द पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो है रेजिस्टेंस जो है वो 27 ओम है टोटल, क्योंकि उसमें लीड वायर्स भी आप इनटू अकाउंट लेंगे. क्लियर है यहां तक ये बात? जी सर. जी सर. ठीक है. अब इमेजिन करें कि आप आरटीडी के बजाय थर्मिस्टर यूज करते हैं और आपका जो है इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट जो है वो है 25 किलो ओम. ठीक है. अब ये जो 1 ओम और 1 ओम रेजिस्टेंस है, अगर हम इसको देखें तो 25 किलो ओम में ये 1 ओम अगर आप ऐड करें या ना करें, ठीक है, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस चेंज जो है वो बहुत कम है. मतलब समझ आ रही है इस बात की? यानी 2 ohm is a significant resistance value for 25 ohm, ठीक है, but 2 ohm for a 25 kilo ohm is a insignificant value, ठीक है. So even if you ignore lead resistances, ठीक है, your calculations will not be that much affected compared to
if you ignore lead resistances for an RTD. समझ आ रही इस बात की? जी सर। ठीक है, so जी let's move forward. चलिए ठीक है, अब आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। सही है, थैंक यू सर। ठीक है, दरमियान में अगर किसी चीज की समझ ना आए तो मुझसे क्वेश्चन पूछें प्लीज। सर ये रगेड क्यों करते हैं कि split in glass ये अच्छा, रगेट का मतलब यह है कि देखें, जब आप एक सेंसर यूज कर रहे हैं, सो यू वांट टू यूज इट अंडर डिफरेंट कंडीशन। यानी अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट गाड़ी के बॉडी में लगा हुआ है, थर्मिस्टर, ठीक है। अब गाड़ी जो है वो कीचड़ में से भी गुजरेगी, वो जो है तेज हवा भी उसके ऊपर लगेगी, हो सकता है कोई बंदा उसके ऊपर, उस सेंसर के ऊपर हाथ भी रख ले। तो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट जो है एक नाजुक सी वायर है या एक नाजुक से सिरामिक मटेरियल है, तो अगर गलती से किसी ने हाथ लगा दिया है तो वो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर उसके ऊपर मिसाल के तौर पे एब्रेशन आ रही है मड की वजह से, तो वो खराब हो जाएगा, तो आपको बार बार उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट को जो है, इसको इनकैप्सुलेट किया गया है ग्लास मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो उस ग्लास का ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, डोंट इमेजिन इट टू बी अ वेरी बिग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। टिपिकली आपके आरटीडीज जो होते हैं ना, वो एक मे बी 5 mm 5 mm ग्लोबुलर, जो टिपिकल थर्मिस्टर होते हैं, वो अराउंड अ ग्लोब ऑफ 5 mm 3 mm 4 mm, कुछ इस तरह के उसके साइजेस होते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट? आपने क्वेश्चन किसने पूछा था? यस सर जी, वकास। तो रगेट इसलिए रखे जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखें फील्ड में एज एन इंजीनियर, इफ यू आर यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, यू वांट इट टू बी रगेट। रगेट का मतलब ये है कि ये एक दिस इज a strong, let me see what's the difficult, what is the dictionary definition of rugged. So rugged, as per the dictionary, sorry, just give me one moment. Okay, rugged. Okay, having so dictionary definition is strongly made and capable of withstanding rough handling. Okay, so that is a dictionary definition of the rugged, that it is made strongly and it can handle rough handling. So rugged means that this instrument will probably survive for long. Okay, Wakas, did I answer your question? यस सर ठीक है ठीक है, so let's move next. Electrical resistance thermometry. Let's do example 8.4. The output of a thermistor is highly nonlinear. ठीक है, that's because of this curve, calibration curve. As you can see that the calibration curve of the RTD is nonlinear. So सर एक क्वेश्चन है जी पूछे। सर, ये जो आरटीडी है सर, इसके अंदर भी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, और थर्मिस्टर के अंदर भी रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। हाँ, तो सर इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या होगा, मतलब इसकी डेफिनेशन और इसमें क्या डिफरेंस है, इनकी वर्किंग प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होगा? ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल तो दोनों का सेम है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट चेंजेस एज द टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल तो सेम है, ये सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो ये हैं कि टिपिकली जो आरटीडी होता है वो मेटल से बना होता है, और थर्मिस्टर जो होता है वो सेमीकंडक्टर, सिरामिक लाइक सेमीकंडक्टर से बना होता है।
ठीक है, दैट इज फर्स्ट वन कि उनकी मेक में क्या डिफरेंस है, वो कैसे किस चीज से बने होते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका जो आरटीडी है उसके जो कैलिब्रेशन कर्व है उसको हम एक लिमिटेड रेंज के लिए लीनियर एज्यूम करते हैं, लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए लीनियर एज्यूम करते हैं, जबकि थर्मिस्टर जो होता है उसको हम लिमिटेड रेंज के लिए लीनियर एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कैलिब्रेशन कर्व जो है वो हाईली नॉन लीनियर है, तो उसको हम लीनियर एज्यूम कर ही नहीं सकते। जबकि आरटीडी की जो कैलिब्रेशन कर्व है वो उसमें भी नॉन लीनियरिटी है लेकिन उतनी नॉन लीनियरिटी नहीं है, सो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं एज ए linear device for a small temperature range। ठीक है, that's another thing। फिर उसके बाद जो है अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किए थे कि बिकॉज ऑफ हाउ व्हाट थर्मिस्टर जो है वो सेमीकंडक्टर सिरामिक मटेरियल है और आरटीडी जो है वो एक मेटालिक मेटल से बना होता है। ठीक है, सो because of that RTD has lower sensitivity compared to thermistor. RTD has lower response time compared to thermistor, or thermistor has faster response time. Since thermistor has higher reference value of resistance compared to RTD, therefore we can ignore the lead resistances when using. We don't have to worry about the effect of, unless it's very high very high value of lead resistance. Okay, unless it's like hundreds of meters long, which typically you won't use it as such. Okay, so these are the differences between RTD and thermistor. जी, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। यस सर, क्लियर, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा, now the output of a thermistor is highly nonlinear with temperature, and there is often a benefit to linearizing the output through appropriate circuit, whether active or passive. In this example, we examine the output of a initially balanced bridge circuit where one of the arms contains a thermistor. ठीक है, so initially the bridge is balanced और मैंने एक थर्मिस्टर को जो है आपके लिए वो कर दिया। So this is not RTD, चलिए यहाँ पे देखते हैं। Consider the Wheatstone bridge as shown in figure 8.8, but replace the RTD with a thermistor having a R0 value of 10 kilo ohm. ठीक है, so this is our thermistor and its value is 10 kilo ohm. ठीक है, and beta value of 3680 Kelvin. Here we examine the output of the circuit over two temperature ranges, 25 to 325 degrees C, and beta is 25 to 25 to 75 degrees C. So अगर हम देखें हम for a large range के लिए, when we look at this for a large range, the output of the Wheatstone bridge is highly nonlinear for temperature. But if we only consider the smaller portion from this place to this place, so like from here to here, okay, then we can treat this nonlinear curve and we can approximate it with a linear line, all the while incurring a relatively small error of linearization. Okay? So in this example, it's just we are not particularly doing any calculation at this moment. We are giving the response of we are given the result of this problem in the graph form. And if you use this circuit and these equation for the full range of
25 degrees C up to 325 degrees C. So you can see that the output of the Wheatstone bridge circuit containing the thermistor device is highly nonlinear output. And there is no way of linearizing this output without incurring huge error of linearization. So yes, we cannot linearize this whole graph. But if we take a small portion of this graph, which is from 25 degrees C to 75 degrees C only, then this curve has, of course, you can see it has nonlinearity, but this nonlinearity is significantly less compared to the whole range. And we can represent this curve by a straight line or a linear line. Okay? And this approximation of a curve with a straight line results in small error of linearization. Okay? Question, students? सर ये हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद भी तो ले सकते हैं उसको, क्योंकि उसके बाद तो जो बिहेवियर है सर वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही आ रहा है हमारे पास। हाँ, लेकिन देखें उसमें आपके पास सेंसिटिविटी वो आपके लिए हाँ फ्रॉम linearization point of view you're right, ठीक है, from a linearization point of view you are right, ठीक है, लेकिन just look at the usefulness of that. आपके पास sensitivity बहुत कम होगी. Second, typically you don't try to use the thermistor beyond 200 degrees C, ठीक है, because of the aging problem. Okay, so yes, from linearization point of view, you can linearize this curve into two portions, let's say this and this, and then maybe this and this, and then you can replace this curve with this and this curve with this straight line. So yes, your answer is correct. We can linearize these two portions, but since we studied in the previous slide, you usually try not to use the thermistor beyond 200 degrees C unless the manufacturer specifically mentions that you can use it beyond 200 degrees C. Okay? That is one concern of mine. And the second one would be that if you see, thermistor typically is a very high sensitivity device, but which is true in this portion. As you can see, small change in temperature results in higher change in output. So small change in input results in higher change of output. But for this portion, a high change of input results in only a small change of output, and therefore this portion has smaller sensitivity, and this will not be a very useful range to use the thermistor. Right. Okay. Okay, so let's move to the next slide. Okay, the material constant beta is to be determined for a particular thermistor. अच्छा, हमने slide पहली चंद slides में हमने study किया था या discuss किया था कि even a single thermistor beta value. So if this is a calibration curve of a thermistor, this is temperature and this is R value, and there is a constant beta. So typically we assume that a single thermistor has only one beta, or we say that beta is not a function of temperature. That means that beta is not changing as temperature changes. And we assume that beta has a single value for a thermistor. Okay? But in reality, beta is a function of temperature, and beta value changes as temperature changes. Okay? In this example, we will do some calculations, and we will, so in this example, we will be given a thermistor, okay? And we will use that thermistor and perform an experiment and find
beta value for that single thermistor at different temperatures. Once we find beta value at different temperatures, we will see that beta value for a single thermistor changes as the temperature changes. Okay? So let's see how do we conduct this experiment. The material constant beta is to be determined for a particular thermistor using the circuit shown in figure 8.10. The thermistor has a resistance of 60 kilo ohm at 25 degrees C. So these are your R naught value of 60 kilo ohm and T naught value of 25 degrees C. Okay. The reference resistance in the circuit on R1 has a resistance of 130 ohm. Okay. Okay. The reference resistance. Okay. I think this is this one. 130.5 kilo ohm. Dissipation constant delta is equal to 0.09 milliwatt per degree C. The voltage source used for the measurement is constant at 1.564 volt. Okay. The thermistor is to be used at temperature ranging from 100 degrees C to 150 degrees C to determine the value of beta. So I'll explain. Just give me a moment. Okay. So these are our values. R1 is 130.5 kilo ohm. So, okay, how does it work? Okay, so we are actually doing an experiment. And what we will do is we have this circuit, and this is our RTD. So I'll take the RTD from here and place it in a furnace. Okay, so this is my furnace. Okay. And from the furnace, what I'll do is that I'll provide different temperatures. And in this particular example, we are providing 3 different temperatures to the furnace. So first of all, I'll set the temperature of the furnace, TF, equal to 100 degrees C, and do my calculations. Find the value of beta. Okay? Then I'll change the furnace temperature to 125 degrees C and find the value of beta again. And then I'll change the furnace temperature to 150 degrees C and find beta value again. Okay? And see if the beta value for this one resistance changes with temperature. Okay? ये बात हमने सिर्फ confirm करनी. यहाँ तक clear है, student? Any questions so far? Then we will go for the calculations. Yes, sir. No, sir, clear. Okay. Now, how do we find beta? If you see beta, formula हमारे पास क्या है? R is equal to R naught e raised to the power beta. Well, let me see. किसी को याद है formula? Beta 1 over T minus 1 over T naught. Okay. Now, how do we find beta value? So, of course, since it's exponential function, we can use ln, natural log, and of course, you can do all those calculations. आसान है ना? इस equation से आप beta की value मालूम कर सकते हैं. Students? Fahad Rasul? Yes, sir. ठीक है. हाँ, दोनों साइड पे आप नेचुरल लॉग ले लेंगे, उसके बाद जो है वही लॉग के लॉज यूज करेंगे, and once you get
ठीक है, तो इससे आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब बीटा की वैल्यू हमें यहां से मालूम करनी है, लेकिन उससे पहले हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। चलो, लेट्स डू इट हियर इन दिस इक्वेशन। ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले, जब व्हेन यू टेक नेचुरल लॉग यू गेट दीज वैल्यूज, ठीक है। स्टूडेंट्स, लेट्स डू इट। चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं। रसूल मुझे बताते जाएं कैसे करेंगे। सो मोहम्मद फहद, ठीक है, आर नॉट इज इक्वल टू, सॉरी, आर इज इक्वल टू आर नॉट e raised to power beta into 1 over t minus 1 over t naught, ठीक है। So we take natural log ln on both sides and ln r naught, ठीक है, e raised to power beta of 1 over t minus 1 over t। जी रसूल आगे बताएं क्या होगा। ln r ओवर सर ये नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट हम नीचे लेंगे, r naught प्लस ठीक करो, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ e raised to power beta 1 over t minus 1 over t naught। नेक्स्ट क्या होगा, ln r, ठीक है, नेचुरल आर नॉट माइनस ln r naught, सॉरी, is equal to beta 1 over t minus 1 over t naught, और ln e से क्या बनता है, सो बस ये 1 ही आ जाएगा। 1 ही आ जाएगा। गुड, सो देन वी कैन राइट इट एज, ठीक है, गायब हो गया, आपको अब नजर नहीं आ रहा है ना। क्या रिसर्च स्क्रीन नो सर। चलो मैं प्रेजेंट विंडो शेयर, ठीक है, ln ये हमारे पास 1 हो जाएगा। सो वी एंड अप विद दिस फार्मूला व्हिच इज ln r डिवाइड बाय r naught is equal to beta into 1 over t minus 1 over t naught, ठीक है, सेम फार्मूला जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड बीटा वैल्यूज, अगर आप देखें इस इक्वेशन में, in this equation, if I want to find beta value, I need to know, if I want to find beta value, of course, t naught is given, t naught जो है हमारे पास 25 डिग्री C है। t की 3 वैल्यूज हम यूज करेंगे। For the first value we use 100 degree C। we have to calculate beta value, ठीक है। r naught और r की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। r naught की वैल्यू गिवन है और r की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं यहां से। So this circuit might look like a complicated circuit, but it is nothing but this circuit। किसी को याद है ये सर्किट? यस सर। ये कौन सा सर्किट? सर वो चेंजिंग क्या कहते हैं सर, वेरिएबल रेजिस्टेंस। चलें, we call it, ठीक है, but we call it potential divider circuit। याद है potential divider circuit? Yes, yes. ठीक है। So if I know this voltage and I know this R value
and I find out this voltage drop across R1, then I can calculate RT value, thermistor value. समझ आ रही है इस बात की? जरा प्रॉब्लम देखें. प्रॉब्लम में हमें क्या क्या चीजें गिवन है. Look at the problem. ठीक है. Look at the problem. So in this problem, so let me draw this one more time. ये क्या हो गया? Okay, so just anyway. So let me. What's going on? Just. Okay. So if you look here, so this is our R1, and this is our RT, and okay, and this is our E1 or voltage drop across R1. Okay. Now we are given input voltage. We know that value, which is which is 1.564 volt. We know that R1 value is 130.5 kilo ohm. Okay, and we are given voltage drop. Okay, voltage drop. Where's the voltage? Okay. So these are the voltage value. If we are given E1 value, so we know from there, we know that voltage drop is R1 divided by R1 plus RT into input voltage, which is EI. So this is EI, this one is E out. Let's call it E out. Okay. And since we know R1 value, we know input voltage value, we know R1 value, and we measure E out value. So we use a voltmeter here. We connect a voltmeter here. With the help of that voltmeter, we find out E output value. So in this equation, the only unknown is RT, or the thermistor resistance. Now, once we know that RT value, okay, for let's suppose for 100 degree C, RT value come out to be this, for 125 degree C. So let's do the whole experiment for one temperature first. So once we know the RT value, then we can use in this equation, we know everything else. We know that T naught is equal to 25 degree C, T is equal to 100 degree C, R naught is equal to 60 kilo ohm, RT is equal to 5477.4 ohm, and the only unknown is beta. So we find out beta value for this temperature. This is the beta value corresponding to this temperature. Okay? Once we do that, then we come back to our experiment and we change the furnace temperature from 100 degree C to 125 degree C, and repeat the whole experiment again. And then for 125 degree C, our beta value comes out to be 3629.9. Then we go back and repeat the experiment for 150 degree C. So we change the furnace set temperature from 125 degree C to 150 degree C this time, and do all of our measurements and calculation, and our beta value comes out to be
3650.2 Kelvin. ठीक है? So, questions up till now, students? Students, सब clear है? एक्सक्यूज मी सर, ये सर आरटी को फाइंड करने में इवन जो है सर, हम ये ऊपर जो आउटपुट वोल्टेज फाइंड करते हैं सर। जी जी, इस आउटपुट वोल्टेज के साथ क्या है रिफत? सर यहाँ पे जो हम आरटी के लिए जो फार्मूला लिखे हैं सर, इसमें जो E1 है सर, E आई तो इनपुट वोल्टेज हो, या E1 ये आउटपुट वोल्टेज जो ऊपर फार्मूले से फाइंड किया हाँ, है। ये इस यहाँ पर मैं देखते हैं। चलो, हाँ, EI जो है ये आउटपुट वोल्टेज है। सॉरी, लेट मी सी, EI इनपुट वोल्टेज है और E1 जो है वो ये है आउटपुट वोल्टेज, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द E1 मींस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। ठीक है, इसे E1 का नाम दिया गया है। ओके सर, सही। ठीक सर है, इवन दिस भी इज, हमारे पास अननोन है ना, मतलब वो तो आपने कहा है कि हम वो एक्सपेरिमेंट करके अब उससे हम फाइंड हाँ, करेंगे। वो हम एक्सपेरिमेंट, सो दिस प्रॉब्लम इज नॉट योर typical numerical. This is not your typical numerical. This is basically a thought experiment. ठीक है, you conduct this experiment in a lab और उस experiment का data आपके सामने रखा गया है and then you do your calculations. ठीक है, so yes, this value is measured during experiment. राइट सर। ठीक है, now the crust of this whole example is this thing. ठीक है, as you can see that the beta value is not exactly equal, but it is not that far. It means it's I don't know how much, kitne, I think it's maybe a percent, 1%, or maybe a less, or something around a percent, 1% or so difference between the three values of beta. Students? यस सर। ठीक है, approximately 100, value of 100 compared to 3500. ठीक है, so it is basically 1/35, and 1/35 is मतलब roughly, if you do just rough estimate, so 1/35 is your error. ठीक है, 1/25 is your 35 is your rough error. So what's assuming that the manufacturer gives you this value. ठीक है, assuming that the manufacturer gives you this value and you use this value to calculate you use this value for 100° C measurement, then in your calculation you will be using a beta value of 3629.9, while in reality the thermistor beta value at 100° C is 3546.7 Kelvin. So there will be an error introduced in your measurement because you used an approximate value of beta for the thermistor instead of actual value of beta at that particular temperature for that particular thermistor. ठीक है, अब इस एग्जाम्पल की आपको समझ आ रही है क्या कन्वे करने की कोशिश की जा रही है इस एग्जाम्पल में? We want you to be sensitive to the fact that beta value of a thermistor is not constant, even though manufacturer data sheet may provide you a single beta, but in reality, beta is a function of temperature, and that beta will vary a little bit for different values of temperature, and because of that, you will incur some error of measurement when you do your experiment or when you try to measure some temperature with the thermistor sensor, because you are using a single constant beta value provided by the manufacturer instead of using a beta value for a specific temperature.
मोहम्मद अवैस, मोहम्मद यासिर, नियामतुल्लाह, सारे लोग चले गए। यस सर। जी, नियामतुल्लाह समझ आ गई इस एग्जांपल की? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर। नो सर, चलें, समझ आ गई सर। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, पूछें। सर यहाँ पे सर आपने बात की कि डेटा शीट पे जो हमारे पास सिंगल बीटा की वैल्यू होती है ना, तो यहाँ पे सर ये टेम्परेचर बीटा जो है ना फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो वहाँ पर सर टेम्परेचर रेंज होगा कि मतलब कि इस रेंज तक हम जो है ना बीटा ये कांस्टेंट वैल्यू रहेंगे। हाँ, उसमें होता है, देखें, होता कि आपको जो डेटा शीट मिलेगी ना उसमें टेम्परेचर रेंज गिवन होगा। लेट्स सपोज फ्रॉम 0 degree C to 150 degree C, and then you will be given a single beta value. Typically you will be given a single beta value, and that beta value is valid for the whole range of the thermistor. ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, you can do the example 8.6, ठीक है? नहीं, ठीक है, I'll check that, ठीक है? But if not now, when we do our statistic topic, then you should be able to do example 8.6. If you have any question in thermistors, in the topic of thermistor, you can ask me now. Otherwise, I'll move forward to the next topic, which is thermocouples. Students, do you have any questions? Okay. नो सर। Chale. नो सर। Chale. So let's move to the topic of thermocouples. So thermocouples is a work on the principle. Well, let me explain this slide first. Let me read this slide first, and then I can explain it in details. So two wires of different metal materials, okay, two wires of different materials, conductor materials A and B, are connected in a circuit with two junctions at two different temperatures, which generate an electromotive force, EMF. EMF means voltage, okay? So let's suppose I can just simply, so if I have one wire, let's suppose it's made of aluminum, and I have another wire which is made up of copper, okay? And then I make a junction here. Just take the ends of the wire and twist them, okay? So मेरे पास एक junction आ जाएगा, and there is another junction, okay? And let's suppose, so these are two dissimilar material wires which make junction A and B. Now let's suppose that the temperature experienced by junction A is T1 and temperature experienced by junction B is T2. So what would happen, that there will be current flow either from in this direction, clockwise direction, or counterclockwise direction. We don't care about that, okay? So so the current flow means that there is some potential which is deriving the current flow. So if I break this circuit like this and put a voltmeter here, then it will experience some voltage, okay, or EMF. It will experience some voltage, and that voltage will correspond to the temperature difference, ठीक है? So let me explain it like this. आप कोई भी दो तारें ले लें, कोई भी दो ले लें, ठीक है, conductor wires.
let's suppose one is copper, the other one can be aluminum, or the first one can be iron, the other one can be platinum or silver or any material, okay? Any conducting material. So you take two dissimilar material wires and join them at the end. And you can join them by simply twisting them, okay? So let's make a junction A by twisting aluminum and copper wires, and junction B at the other end by twisting aluminum and copper wires. Then, if you put a voltmeter in this circuit, and there exists a temperature difference between junction A and junction B, then the voltmeter will show some voltage. Okay? It will show some voltage. Let's suppose the two temperatures are same, T1, T1, then the voltage output will be 0. Let's suppose the two temperatures are different, T2, okay? Then there will be some non-zero voltage measured by the voltmeter at this location. If you try to do this experiment without using different material and instead use the same material, then even if there is temperature difference between the junction A and B, the voltage output will still be 0. Okay? So it is very important, it is a must that you should have two dissimilar material. Okay? Questions? सर क्यों नहीं होगा सर? टेम्परेचर डिफरेंस है तो फिर वोल्टेज जनरेट क्यों नहीं होगा? क्यों होगा वोल्टेज क्यों जनरेट होगा? सर टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस से वोल्टेज क्यों जनरेट होगा? तो सर नहीं, मतलब इसमें क्या सिग्निफिकेंस है कि मटेरियल चेंज करने से जो है वो वोल्टेज जनरेट हो रहा है? हाँ, this is called electrothermal phenomena, and this phenomena is called Seebeck effect. Okay? And this Seebeck effect is a physical phenomena, and it only happens when you have two dissimilar material which are joined together at the ends, and if those ends are at different temperature. Fahad Rasool? ठीक है, यानी ये मैंने इन्वेंट नहीं किया. This is a physical phenomena. It has been discovered by scientists a few centuries ago, and they found out that if you have two dissimilar materials, ठीक है, and you made junctions at the end of those dissimilar materials, and then you put those junctions at dissimilar temperature, then this will result in current flow in the circuit made of those dissimilar material. Or if you break the circuit, it will result in potential difference at the point of breakage. Up clear है फहद? राइट सर. सर विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट कोई भी हाँ, कोई भी नहीं, इसमें हमने कोई वोल्टेज सोर्स, कोई करंट सोर्स, कुछ भी नहीं है. It kind of becomes like a battery itself. There is a flow of current. राइट सर. ठीक है? Now, of course, if you want to see in a bit further, so there are three phenomena here. Seebeck effect, that's what we use. In in thermocouples. There's Peltier effect, which is the same phenomena but used slightly differently. This is used for cooling or heating purposes. And then there is a Thomson effect. I'm not going to go into those details. If you want to go into in-depth,
go and study the Seebeck effect, or you can also study Peltier effect and Thomson effect. Just simply check the book or online references for that. In our case, we are only concerned about using the Seebeck effect phenomena to do temperature measurements. We will utilize the Seebeck effect phenomena to do our temperature measurements. Okay? The magnitude of the potential depends, or the magnitude of the voltage depends on the difference in temperature and the particular metals used in the thermocouple circuit. So this voltage output, what will be this value, assuming that these are two different metals for two different temperature? This value will depend on not only on the temperature values, what's the temperature's actual values are, but it also depends on the material chosen to construct a thermocouple. Chale, let's do a summary. Let me first finish this slide and then we'll discuss it. The magnitude of EMF E alpha depends on a material property called absolute Seebeck coefficient alpha and the distribution of temperature along the wire. Direct conversion of heat, thermal energy to electric energy through Seebeck effect. Current is produced between two unlike metals if circuit is closed. So what is a thermocouple? A thermocouple, what is a thermocouple? A thermocouple is a temperature measurement device which utilize electrothermal effect called the Seebeck effect. And how is the thermocouple made? What is the construction of a thermocouple? A thermocouple is simply made up of two dissimilar conducting or two dissimilar metal wires which are twisted at each end to make two junctions. We will call them junctions. So we have one metal, we have another metal wire, and then we combine these two wires together by simply twisting them. Okay? And this is your thermocouple now. This is your thermocouple. And now, if there exists temperature difference between these two junctions, T1 and T2, and of course you have two different materials, then there will be some output voltage. And the magnitude of this voltage is not only a function of temperature T1 and T2, but it is also a function of these two material. For example, what does that mean? For example, let's suppose I have 0 degree C and 25 degree C. And this is copper and this is aluminum. Okay? This particular configuration, let's assume that this particular configuration result in 1.1 volt output. We are just assuming it. Okay? Now, if I change this 25 degree C to 50 degree C, now of course this voltage might be, let's suppose this is 2.2 volt. So the first one for 0 to 25 degree C, the output of the system is 1.1 volt, and from 0 to 50 degree C, the output of the system is 2.2 volt. Now, if I change this material, second material, and let's make it silver, Ag, I believe. Okay? And repeat the same experiment for 25 degree C. Now, 0 to 25 degree C for silver may result in not 1.1 volt, but maybe 1.5 volt. Similarly, from 0 to 50 degree C
may not result in 2.2 volt, but maybe 3 volt. So what I'm trying to say here is that the output voltage of a thermocouple is not only a function of temperature values at the two junctions, but also a function of the material from which the thermocouple is constructed. Clear यहाँ तक students? Student, ठीक है? Any question in what is a thermocouple and how it is made? इसमें कोई question है students? सर जी, रिफत. सर यहाँ पे जो है ना मैंने बात की कि जो एम है प्रोड्यूस हो एज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल, तो फर्ज करें जो हम इस केस में कॉपर और सिल्वर है, अगर हम इसको रिप्लेस करें तो उसके जो है ना वो थर्मल कंडक्टिविटी भी जितनी ज्यादा होगी तो उसके साथ भी हुई में ज्यादा हो नहीं, इसके थर्मल कंडक्टिविटी के साथ ताल्लुक नहीं है. इलेक्ट्रिकल मटेरियल, सर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से क्या होगा? क्वेश्चन पूछने दोबारा. मतलब कि जिस मटेरियल की ज्यादा और फर्ज करें कॉपर की ज्यादा है तो वहाँ पे सर ये एमएफपी ज्यादा प्रोड्यूस होगा सर. नहीं, इस तरह से हम नहीं कह सकते. ठीक है, इट्स नॉट एज सिंपल कि आपको अगर थर्मल कंडक्टिविटी पता है सो यू कैन प्रिडिक्ट कि थर्मोकपल में इसका इफेक्ट क्या होगा. ठीक है, उसके लिए हमारे पास ग्राफ्स मौजूद है. ठीक है, वी विल कम टू दोस ग्राफ्स. आई विल जस्ट शो देम यू. आई विल शो देम. रेजिस्टेंस पे इफेक्ट करता है सर. नहीं, इधर आ जाए. इसकी रेजिस्टेंस कम हो उसकी वोल्टेज ज्यादा होगी. इधर आ जाए ना. डिफरेंस होना चाहिए. देखें, ये है. If you want to design a thermocouple, you use these graphs कि different material के बनाने से जो है sensitivity पे या output पे क्या effect पड़ेगा. ओके सर, सही. ठीक है. So don't मतलब don't assume कि जो material conductivity है उस of course electric behavior पे फर्क पड़ेगा, लेकिन डोंट assume that you can predict कि थर्मोकपल का आउटपुट क्या होगा अगर मुझे इस मटेरियल की कंडक्टिविटी का पता हो. ठीक है, यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी या एक्सटेंसिव मटेरियल यूज करना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड and then we can do some question answer sessions. Okay, so for a thermocouple, we have three laws: law of homogeneous material, ठीक है, law of intermediate material, and law of successive or intermediate temperature. So law of homogeneous material, law of intermediate material, law of intermediate temperatures. ठीक है. So first one, law of homogeneous material. State this law requires that at least two material be used to construct a thermocouple. वही बात है कि अगर आप दोनों वायर्स अगर सेम है, सो अगर आप उनका लूप बना ले, उनका जंक्शन बना लें, इट विल नॉट वर्क एज ए थर्मोकपल. ठीक है. सो लॉ ऑफ होमोजेनियस मटेरियल सेज दैट you cannot make a thermocouple out of homogeneous material. Sorry, sorry, not that. So, okay, law of homogeneous material. ठीक है, law of homogeneous material means, देखिए, let's suppose if I have aluminum here and I have copper here, and let's suppose aluminum is not homogeneous. ठीक है, let's suppose aluminum have let's suppose part of the wire is, part of the wire is, so this is aluminum, and let's suppose this portion is iron. ठीक है. What would happen? Student, किसी को पता है? Can you guess what would happen if I have more than two materials? सर अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो उधर वोल्टेज इंक्रीज. वोल्टेज.
अच्छा वोल्टेज ठीक है, बढ़ेगा। दोनों बातें सही हैं। फहद ने जरा ज्यादा प्रिसाइसली बताया। सो दिस इज बेसिकली मल्टीपल थर्मोकपल्स, ठीक है। This junction also behave as junctions of thermocouple, and this will also behave as junction of thermocouples. Okay. So for the first law, we say that for a thermocouple, you need at least two material to be used to construct a thermocouple circuit for the purpose of measuring temperature. We will come into this detail in the coming slide. ये details जो है ये और भी clear हो जाएंगी। कहने का मेरा मतलब ये है, for example, चले हम इसको इस तरह से देख लेते हैं। For example, ये मेरे पास एल्यूमिनियम है, ये मेरे पास आयरन है Fe, ठीक है। ये सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्चुअल जो मटेरियल होंगे थर्मोकपल के वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन यू कैन कंस्ट्रक्ट thermocouple material even from any two conducting wires, any two metals, ठीक है। लेकिन जो production grade thermocouples होंगे, they are made of specific metals and alloys, and we will go into that detail in a little while. So let's suppose what I do, this is iron and this portion is aluminium, and then I connect it with copper wires, and then I connect it to a voltmeter. Of course, the voltmeter is also made of, it has a copper coil. So if you, as you can see, we have two junctions, junction 1, junction 2, but also junction 3 and junction 4. So each of the junction will be contributing to the voltage output if they are at different temperatures. यहाँ तक clear, students? Yes. ठीक है। अच्छा, law of intermediate material. The algebraic sum of a thermoelectric forces in a circuit compared to any number of dissimilar material is 0 if all the circuit is at the uniform temperature. But let's say all of this circuit, this is T1, this is T1, this is T1, and this is T1. If all of the circuit is at the same temperature, will it conduct any current? Will there be any output voltage in this circuit? No, No, sir. sir. नहीं No, होगा sir. ना, ठीक है। But what if this is T1, T2, and this is T1, T1? Would there be some output voltage now? No, sir. No or yes? यस सर होगा। No. यस क्यों सर। होगा? क्यों होगा? सर वो जो T1 और T2 के सर डिफरेंस, ये जो सर ये एक जंक्शन थर्मोकपल की वजह से होगा सर। सर ये जो हाँ जंक्शन जो हमारे साथ वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है उसमें तो सेम टेम्परेचर है, तो इस वजह से नहीं होगा। नहीं, देखें ये दोनों जंक्शंस जो है ना J1 J2, they will contribute potential difference to the potential difference, और J3 J4 की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी पोटेंशियल डिफरेंस को। समझ आ रही इस बात की? क्योंकि ओके। दोनों, क्योंकि ये J3 J4 जंक्शंस जो हैं ये सेम टेम्परेचर पे हैं। थर्मोकपल की जो EMF आउटपुट है, it will depend on difference of material and टेम्परेचर डिफरेंस। अगर मटेरियल डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस ना हो तो फिर भी वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगी, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो और मटेरियल डिफरेंस ना हो तो फिर भी वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगी। फॉर द वोल्टेज contribution of a thermocouple, it is a must that the materials need to be different and the junctions need to be at different temperature. जी फाद। यस सर, ये लेकिन ये जो J1 और J2 जंक्शन है सर, ये तो सीरीज के साथ कनेक्टेड है वोल्टेज में, मतलब इसका पैरेलल कनेक्शन तो नहीं है। ये J3 और वाया J4 ही जा रहा है, और J3 और J4 हमारे पास वो सेम टेम्परेचर पे है।
हाँ ठीक है. So what happens when you have two batteries? ठीक है, जो कि सीरीज में कनेक्टेड हो. यस सर. क्या होता है when you have two batteries, two voltages in series? क्या होता है फाद? करंट सेम हो. तो उसमें दो बैटरीज सीरीज में कनेक्टेड हो, मिसाल के तौर पे ये V1 हो, ये V2 हो, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा? V टोटल तो डिवाइड हो जाएगा. V1 plus V2 सर. V1 प्लस V2 होगा. यस सर. ठीक है, और अगर V2 इक्वल टू 0 हो तो फिर V टोटल किस चीज के बराबर हो जाएगा? V1 प्लस 0 इज V1 इक्वल टू V1 के बराबर. ठीक है. So you can treat thermocouple like a battery. जैसे बैटरी नहीं होती, like a EMF source. You can treat it as a for understanding. ठीक है. You can treat it like a EMF source, which it actually is a EMF source, or you can treat it like a battery in simple words. Third one is law of successive or intermediate temperatures. If two dissimilar materials, okay, let me explain this law first. Third law. Chale, let's take a thermocouple, and again I'm using simple example of aluminium and copper, but in reality your thermocouples are made of special materials. But of course, if you make a thermocouple of aluminum and copper, it will still work. Okay? So let's say I have a thermocouple 1 between two junctions. So this is aluminum and copper. And let's suppose this is 0 degree C, this is 25 degree C. And then thermocouple 2, which is again aluminum and copper. And let's suppose this is 50 degree C. Okay? And then I have, so this one is thermocouple 1, this one is thermocouple 2, and then I have a third thermocouple. Again, same type of thermocouple, aluminum and copper. Let's call this thermocouple 3. Okay. Now, let's suppose I have a voltmeter connected here, a voltmeter connected here, and a voltmeter connected here. Okay, let's call this V1, V2, V3. Okay, now I'm going to write an equation which is V3 is equal to V1 plus V2. Does it make sense, students? Yes sir. yes sir. यस. ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है, let me read it now. If two dissimilar homogeneous materials that forms a thermocouple circuit produce EMF1 or V1 when the junctions are at T1 and T2, T1 and T2 is 0 and 25 degrees C, and produce EMF2 when the junctions are at T2 and T3, which is 25 and 50 degrees C. ठीक है? The EMF generated when the junctions are at T1, 0 and 50 degrees C, and T2, the EMF generated when junctions are at T1 and T3 will be EMF 1 and EMF 2. This law allows a thermocouple calibrated for one reference temperature, say T2,
to be used at another reference temperature such as T3 to determine intermediate temperature T1. G students. Question? सर ये लास्ट सेंटेंस की समझ नहीं, दिस ला अलाउज। ठीक है, चलिए अभी हम इसके जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। जब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक 2 स्लाइड आगे, तो फिर अगर if that doesn't answer, you ask me that question again. ठीक है? अब तक I'm gonna say some things. अगर इनमें आपको confusion है, ask me. Okay. Number 1. What is the phenomena on which thermocouple works? कौन से phenomena के बेस पे काम करता है? Seebeck effect. Seebeck effect. Seebeck effect, which is a thermoelectric phenomena. और इस phenomena, ये phenomena कैसे काम करते हैं? Can somebody explain it to me? Yes sir. सर हमारे पास 2 मटेरियल्स होनी चाहिए डिफरेंट, हाँ, और 2 dissimilar मटेरियल material और डिफरेंट टेम्परेचर पे होनी चाहिए, तब ये फिनोमेना का काम करेगा। अगर मटेरियल सेम होते हैं तब, अगर टेम्परेचर डिफरेंस भी होते हैं तब भी काम नहीं करेगा। अगर मटेरियल सेम होते हैं, टेम्परेचर भी सेम होते हैं, तब भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ सिर्फ काम एक, उस वक्त करेगा जी सर, हाँ, जब सिर्फ मटेरियल एक, डिफरेंट हो और टेम्परेचर डिफरेंट हो। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी एक बात आप दरमियान में शायद स्किप करके, वो ये है कि जो आपके पास डिसिमिलर मटेरियल है, उनसे आपने जंक्शंस बनाने। ठीक है, यानी अगर आपके पास 2 वायर हैं डिसिमिलर मटेरियल के, तो एक एंड पे भी उनको आपने ट्विस्ट करके उससे एक जंक्शन बना लेना है, और दूसरे एंड पे भी आपस में ट्विस्ट करके दूसरा जंक्शन बना लेना है। तो अब इससे आपके पास थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस, जिसे हम थर्मोकपल कहते हैं, वो बन जाता है। और बाकी आपकी सारी बातें ठीक हैं कि 2 डिसिमिलर थर्मोकपल हमेशा 2 डिसिमिलर मटेरियल से बनता है, और थर्मोकपल के लिए जरूरी है उसके आउटपुट वोल्टेज उस वक्त आएगा कि एक तो थर्मोकपल मतलब है कि 2 डिसिमिलर मटेरियल से बनाओ, और दूसरा ये कि जो 2 जंक्शंस होंगे थर्मोकपल के, वो दोनों जंक्शंस के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस हो। ठीक है, अच्छा, अब बस यहां तक काफी है। अब हम लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, देन वी विल डिस्कस। अब जो आपकी बात आ रही थी कि जब आप मार्केट में जाएंगे ना थर्मोकपल खरीदने, सो यू डोंट गो टू द मार्केट एंड टेल देम कि मुझे एल्यूमिनियम और कॉपर का थर्मोकपल दे दें, या मुझे एल्यूमिनियम और आयरन का थर्मोकपल, या मुझे प्लैटिनम और कॉपर का थर्मोकपल दे दें। ठीक है, व्हेन यू गो टू द मार्केट, you ask for the type of thermocouple. ठीक है, और टाइप ऑफ थर्मोकपल कौन कौन से हैं? अपार्ट they are E, J, K, S, T. ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट थर्मोकपल्स है। एंड व्हाई डू वी कॉल दिस वन E? इसे हम E क्यों कहते हैं और इसे J क्यों कहते हैं? इट इज बिकॉज E is made of chromel, and the two material in E-type thermocouples are chromel and constantan. The two material in J-type thermocouple are iron and constantan. अब आप कहेंगे सर ठीक है, आयरन की तो हमें समझ आ रही है, लेकिन ये कंस्टांटन और क्रोमेल क्या चीज है? आप तो कह रहे थे कि कॉपर और एल्यूमिनियम की बातें कर रहे थे, तो ये कंस्टांटन और क्रोमेल क्या चीज है? सो इट इज हियर। सो कंस्टांटन, ये Constantan is an alloy of 55% copper with 45% nickel. Chromel is an alloy of 90% nickel with 10% chromium. And alumal is an alloy of 94% nickel, 3% magnesium, 2% aluminum, and 1% silicon. Okay? So we go back. Now does it make sense now? Ab ye clear hai? E-type thermocouple. When you go to the market, you don't ask them to give me a copper or aluminum thermocouple. You ask them, give me a E-type thermocouple or K-type thermocouple or T-type thermocouple. Okay? And how do you choose? क्या आपको E-type thermocouple यूज करना है, या K-type यूज करना है, या T-type यूज करना है, या S-type यूज करना है, या J-type यूज करना है? So this table kind of give you an idea apart from other as well. ठीक है, like
Okay, so E-type thermocouple has higher sensitivity, highest sensitivity. J-type is can only be used for non-oxidizing environment. K-type thermocouple is a higher temperature thermocouple compared to E and J. S-type thermocouple has a long-term stability and can be used for very high temperature up to or less than 1768 degrees C. And T-type thermocouple is recommended for reducing or vacuum environment of temperature less than 400 degrees C. So these you can decide on the basis of this criteria, or you can use this table. So if you look at the accuracy, so this accuracy for S-type, the accuracy is plus minus 1.5 degrees C or 25.25%, whichever is greater. For R-type thermocouple, it is 1.5 degrees C. For B-type is plus minus 0.5 degrees C. T-type is plus minus 1 degree C or 0.75 degrees C. J, K. So you can use these two tables to select one of the thermocouple for your purpose of temperature measurement. And of course, there will be other considerations like cost of the thermocouple. So the platinum-based thermocouples are usually expensive. So S may be more expensive. It's actually more expensive than K. The typical thermocouple that you will see in the market, take it abundant, you see in the market abundantly, is the K-type thermocouple. This is the most frequently used thermocouple. Students, questions? सर जी सर ये जो अभी आप बता रहे थे ये क्रोमेल और कॉन्स्टेंटाइन, सर इसका जो पॉजिटिव साइन लगे और नेगेटिव, सर पॉजिटिव का क्या मतलब है सर? यहाँ पे तो इसमें दो कॉम्बिनेशन है, अगर क्रोमेल को देखें तो ये दो उससे बना हुआ है, एलॉय से बना हुआ है, तो इसमें पॉजिटिव कहाँ से आएगा? और ये भी इसको नेगेटिव कैसे लगाए? ये पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन है इसकी। क्रोमेल जो है वो पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल, और कॉन्स्टेंटाइन जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके लिए आप इस टेबल पे आ जाएं, ठीक है, ये बात है। जरा देखें, ये इधर आपको स्क्रीन में KP, ये KP का मतलब है K पॉजिटिव, ओके सर, ठीक है, और इसी तरह K नेगेटिव। तो देखें इन दो हर मटेरियल के लिए K पॉजिटिव मटेरियल कौन सा है? K पॉजिटिव मटेरियल हमारे पास कौन सा है? K पॉजिटिव हम देखते हैं, K का पॉजिटिव हमारे पास, K का पॉजिटिव जो है क्रोमेल है, और K का नेगेटिव जो है वो एलोमल है, ठीक है। सो इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, दिस इज K पॉजिटिव क्रोमेल, दिस इज K नेगेटिव एलोमल, ठीक है। अब आपको इंडिविजुअल मटेरियल गिवन है, ठीक है। अब इसमें से कोई दो मटेरियल सेलेक्ट करके आप बता सकते हैं कि इसके जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा एट सेट टेम्परेचर, ओके सर, ठीक है। सो दैट्स हाउ जो है हमारे पास that's how designers of thermocouple create thermocouples, ठीक है। उनके पास इंडिविजुअल मटेरियल के कर्व्स हैं, ठीक है, और फिर उन कर्व्स की कॉम्बिनेशन दो मटेरियल्स को कंबाइन करके वो थर्मोकपल बनाते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? सर यहाँ पे जो जी जी सर भैया लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हाई टेम्परेचर के साथ ही, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्या मतलब है सर? ज्यादा देर के लिए वो हाई टेम्परेचर पे हो? नहीं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का मतलब यह है क्योंकि जब आप इसका एजिंग के साथ ताल्लुक है, सो इफ यू आर यूजिंग ए सेंसर, ए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो पहले 1 महीने तो वो सही काम करेगा,
लेकिन जैसे अब गाड़ी में अगर आप थर्मोकपल यूज करते हैं तो गाड़ी जो है वो 1 महीने के लिए तो नहीं होती ना, वो तो प्रॉब्ली 10 सालों के लिए आप यूज करेंगे। सो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपका जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा ड्यूरेशन तक अपनी वो मेंटेन रखेगा, कैलिब्रेशन उसकी मेंटेन रहेगी, उसकी वैल्यूज मेंटेन रहेगी, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है रिफत? ओके सर, सही क्लियर। जी। सर ये जो वायर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है सर, इसकी समझ नहीं आई सर। अच्छा, वायर पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये होता है कि इसकी जो पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन है, एक की पॉजिटिव पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन है, दूसरी की नेगेटिव पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन है। तो दोनों के जो अगर आप थर्मोकपल दो पॉजिटिव मटेरियल का यूज करेंगे तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। अगर आप एक थर्मोकपल जो है फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस, अगर आप थर्मोकपल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव मटेरियल के लिए यूज करते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द सेम टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा। इस बात को लेट मी एक्सप्लेन इट लाइक दिस। देखें, अगर मैं ये वाला इस मटेरियल का की पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, इस मटेरियल का नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ। सो अगर इन दो मटेरियल के दरमियान अगर मैं वो बना लूं, ठीक है, थर्मोकपल, तो एट सेम टेम्परेचर मेरे पास बहुत ज्यादा डेल्टा वी आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव इस पॉजिटिव पीटीसी मटेरियल, आप इसको वो पीटीसी तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है ना, दिस इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं इन दो मटेरियल्स के दरमियान थर्मोकपल बनाने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप जो है फॉर द सेम मटेरियल इन दो के मुकाबले में बहुत कम होगा। दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू, दिस इज वेरी लार्ज वैल्यू। इस बात की समझ आ रही है? ठीक है, ये पॉजिटिव मटेरियल क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आप इफ यू यूज दिस मटेरियल इन अ थर्मोकपल, ठीक है, देन विद द राइज ऑफ टेम्परेचर or the rise of temperature difference between the two junction will result in positive potential contribution by this material. ठीक है, and this material will for the temperature difference of junction will contribute negative potential. So the potential difference between the positive contributing material and negative contributing material will be the output of the thermocouple. सही है सर। ठीक है, अच्छा, let's go back. सर ये थर्मोकपल वाली स्लाइड में क्वेश्चन है सर। जी, कहाँ पे? यस सर, इस स्लाइड में सर हाँ, ये जो फिगर बना हुआ है यहाँ पर, ये जो ओपन सर्किट है सर, यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं। यहाँ से तो सर यहाँ पर तो दोनों सेम मटेरियल है सर, हमें वोल्टेज के जो ये दो टर्मिनल्स है ये अलग अलग नहीं मटेरियल। नहीं, वोल्टेज कंट्रीब्यूशन तो इन जंक्शंस की वजह से आ रही है ना। वोल्टेज कंट्रीब्यूशन जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है, देखें होता ही है, अगर मैं एक दो डिसिमिलर मटेरियल ले लूं, उनके एंड्स को आपस में कंबाइन कर लूं, ठीक है, और उनके जो जंक्शंस जो बनते हैं वो दो डिसिमिलर टेम्परेचर पे हों, सो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी करंट फ्लो इन दिस सर्किट। ठीक है, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो किस वजह से होता है स्टूडेंट? व्हाट ड्राइव्स करंट फ्लो? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। सो चूंकि यहां पर अभी तो सर्किट ओपन नहीं है ना, सो देयर विल बी करंट फ्लो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर, ठीक है, आप यूं इमेजिन करें कि ये एक पाइप है जिसमें पानी सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। अगर मैं यहां पे इस पाइप को ब्रेक कर दूं तो इन दो पॉइंट्स को के दरमियान अगर एक मैं प्रेशर गेज लगा लूं, सो विल इट एक्सपीरियंस प्रेशर? यस सर। ठीक है, रिफत आपने ही क्वेश्चन पूछा था। रिफत? नो सर, सही है। नो सर, मैंने पूछा।
हाँ शहीर जी। यस सर। so that is ठीक है। जब when you अगर एक सर्किट जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, if you break that circuit it will create potential difference at the point of breakage, ठीक है। यस सर। Does that answer your question? यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, now how do we use a thermocouple? How do we use a thermocouple? ठीक है, अब तो हम सारी बातें अब तक हम कि what is thermocouple, what is thermocouple made of, what is the working principle of thermocouple, ठीक है, अब तक सारे काम हम ये करते हैं। So let's say, how do we use thermocouple? A thermocouple is used differently compared to RTD thermistor or the other thermometers that we have studied so far. How they are used differently? That thermocouple doesn't give you absolute value of temperature. It only can give you the temperature difference between two junctions. So if this is junction 1 and this is junction 2, and let's suppose I want to measure a furnace temperature and I put the junction in that furnace, and this is some unknown temperature T, unknown, excuse me. And so I need to know the second, because it can only give me delta T. The output of a thermocouple is not T question mark. The output of thermocouple is always delta T, which is delta T is T1 minus T2. Okay, let's suppose. Now, if I know the delta T value, and and I want to find out T question mark, इसे मैं मालूम करना चाहता हूं, then I need to know T2 value. Okay? For that reason, we always need to know the reference junction temperature. We call it TR. And we can find this reference junction temperature either through another temperature measurement device, or we can put this reference junction at a known temperature and then measure the unknown temperature value. इस बात की समझ आ रही है students? Students, अगर confusion है तो मुझसे पूछ लें, question पूछ लें, ठीक है? So what I'm saying is that in thermocouple, the output of thermocouple is of course voltage, and you can convert that voltage output for any type of thermocouple into delta T. Once you get delta T, you need to find out the unknown junction temperature or the measuring junction temperature value. But since delta T is difference of measuring temperature minus reference temperature. So since we only have delta T, let's suppose this is 15 degrees C. Now to find out Tm, you need to know Tr value. Now, of course, you can either measure Tr value with another instrument like a RTD or a thermistor. This is one of the way, but then the question is, okay, what is the usefulness of thermocouple if we need to use another temperature measurement to just measure the reference junction temperature? फिर इसका फायदा क्या हुआ? Thermocouple का फायदा क्या हुआ? To answer that question is, I'll take you back to this. Where is it? There is no thermistor, at least that I'm aware of, that can measure temperature ranges of 1000 degrees C or 700 degrees C or 1300 degrees C or 1800 degrees C. Okay? I would be doubtful about 400 degrees C as well. Okay? Because typically they are used for around 200, 250 degrees C, typically around 200 degrees C.
ठीक है? So that is one of the reason why we would use thermocouple even if I have to use a thermistor just to use a thermocouple. ठीक है? That is one of the reasons. The second reason is that there is another method of using a thermocouple, and that method utilizes a cold junction technique method. ठीक है? Or reference junction technique. So what we do, if this is T measurement junction and this is T reference junction, what I do is I put the T reference junction in ice bath. Ice bath में डाल देता हूँ, ठीक है? And ice bath will maintain the temperature at 0 degrees C. So when I get delta T value of 15 degrees C, and since I know that my reference junction is at 0 degrees C, then that means that Tm is equal to 15 degrees C or minus 15 degrees C. वो थोड़ी देर में देख लेंगे, ठीक है? Is it clear, students? हमारे पास कोल्ड जंक्शन या रेफरेंस जंक्शन के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं. एक तरीका तो यह है कि we keep the reference junction at known temperature. The other method is that if we cannot keep the reference junction at known temperature, then we need to use another temperature measurement device that we will use to measure the reference junction temperature value. Question then is, okay, if we have to use another device, then why do we use thermocouple? Why not use the other device to directly measure the temperature? Answer to that is that thermocouple has qualities compared to RTDs and thermistor that you will not find in either RTD or thermistor, and you will be forced to use a thermocouple even if you have to use a thermistor, typically a thermistor, to find the reference junction temperature value. Clear, students? Yes, sir. Okay. Now, so this is the example of a thermistor circuit. So this is where thermocouple connects. Then that's where the cold junction is made, or the reference junction is made. This is JR, and thermistor is placed very close to the reference junction. So using this thermistor, you can find the value of the reference junction temperature here. Now let's go and do some problem solving. Okay. Now thermocouples are non-linear devices. Okay. Thermocouples are non-linear devices, and we do not linearize them. Because if we try to linearize them, the error of linearity will be so much that we cannot stated accuracies given in this table means that the accuracy of thermocouple will depreciate significantly if we try to linearize a non-linear thermocouple. Thermocouples by their nature are non-linear devices. Okay? Now, a non-linear curve of a thermocouple, let's suppose this is a non-linear curve, just any non-linear curve. Now we can represent a non-linear curve by a polynomial. Okay? A line is a first degree polynomial. Y is equal to mx plus c is a first degree polynomial. Okay? Because the highest power of variable x, or the independent variable x, is 1. A quadratic equation or a square will have a power 2, okay, and so on. So the higher the non-linearity, okay, typically we will result in higher degree polynomial. ठीक है, जितनी non-linearity ज़्यादा होगी उतनी
टिपिकली हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ती है. अब J type thermocouple, so the formula, the equation for the calibration curve of thermocouple is simple formula that voltage output of a thermocouple is equal to summation of C I Ti, where I is equal to 1 up to n. Or if I expand this summation sign, it becomes C1 T1 plus, or C2 T2 plus C3 T3 plus C4 T4 plus C5 T5. ठीक है, and so on up to Cn Tn. ठीक है. Now to adequately represent a J-type nonlinear curve, we go up to n is equal to 8, or we have total of 9 terms starting with 0. Sorry, let's start with 0. So C0, T0, C1, T1, C2, T2, C3, C3, okay, C3, T3, and so on. Okay? Students, any questions up till now? Students? No, sir. ठीक है. Now, how do we use this equation? Okay. So, for example, in this equation, let's suppose for simplicity's sake, I'm only going to use. So for the J-type thermocouple, you will have 9 terms. For J-type thermocouple, we will have 9 terms. So output EMF voltage output of a thermocouple experiencing a temperature Ti will be something like this. C8 Ti8. And these are the C values. And C8 value. Okay. Now you will have the voltage output. Let's suppose it comes out to be 0.35 volt. And then you will have to solve this equation to find the value of Ti. Can anyone solve this equation for Ti? Students? Students? Anyone? नहीं भी पता तो फिर भी बता दे कि नहीं सॉल्व कर सकते. Students? No, sir. पता नहीं. ठीक है. And I'm not going to ask you to solve it. ठीक है. At least you know that it will be very time consuming, it will be difficult and time consuming. So we don't use this equation to use a thermocouple. We use this equation if you're writing a computer code, okay, or for other research purposes, okay. If you need to use a thermocouple, rather than using this equation and solving this equation to find out the temperature of the unknown of the measuring junction of the thermocouple from the voltage measured voltage output of the thermocouple, rather than solving this equation, we will use this table. Students? Students? जी सर. Yes, sir. ठीक है. Okay, so how do we use it? Let's suppose I have a thermocouple
and it's a K-type thermocouple. Okay, so I put the reference junction in Yes, I, sir. जी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे स्टूडेंट नो सर क्वेश्चन नहीं किसी ठीक है so this is JR or reference junction at T naught equal to 0 degree C ठीक है and this is T measurement that I want to measure and I don't know this temperature what this temperature is ठीक है but I have a voltmeter that is connected between the two junctions. Okay? And when I perform my experiment, I get the value of I get the value of, let's suppose, let's take a fixed value. Let's take it at minus, the voltage is minus 0.301 voltage. Okay. Now I want to know Tm. What is Tm value? Okay. Since my reference junction is at 0, okay, so let's go here. So let's see where minus 3.0 voltage. So these are all your voltage values. Now look where minus 3.01 voltage is. किसी को नजर आ रहा है students? यस सर कहाँ पे? सर ये सर लास्ट रो में और ये 6th कॉलम पे बिल्कुल सही. Very good. So this is our value. ठीक है. Now if this is our value, so what it is saying that look at this column. This is our temperature column. Now, if this temperature were to be 0 degree C, then the output voltage would have been 0.000. Okay? If this temperature would have been minus 1 degree C, okay, then the output would have been 0 minus 1. This is minus 1. Okay? So this is minus 1. If this unknown temperature were minus 2, it would have been this value. If this temperature were minus 3, it would have been this value. If this temperature would have been minus 4, it would have been this value of voltage. If this temperature minus 5, this is minus 6. So we know that the temperature, if the output voltage is minus 3.01, if the output voltage is minus 3.01 and the reference junction is at 0 degree C, then the measuring junction is at minus 6 degree C. Clear, students? सर ये तो बहुत लिमिटेड वैल्यूज नहीं है हमारे पास नहीं, ये टेबल का एक छोटा हिस्सा है. ठीक है, फ्रॉम 0 to minus 210 और फिर 0 से minus 1700 minus 1800 के टेबल का दूसरा हिस्सा है, वो किसी और पेज पे इन स्लाइड्स में इंक्लूडेड नहीं है, बुक में मौजूद है. राइट सर. और सर जो टेम्परेचर रेफरेंस वाली है सर, ये तो इसने काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, लेकिन हमने ये कहा था कि हम लोग इसको यूजुअली 0 एज्यूम कर लेंगे अगर हम आइस बात कंसीडर कर रहे हैं. आइस बात कंसीडर करते तो 0 हो गया, लेकिन अगर 0 पे ना भी हो तो देन वी विल यूज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोकपल्स. याद है? ठीक है, वो जो मैंने आपके सामने यस सर. यस सर, ये जो मैंने आपको कहा था.
The voltage is equal to V1 plus V2. बिल्कुल सही. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हम मेरे ख्याल में ऐसे कोई एग्जाम्पल है, सो वी कैन डू दैट एग्जाम्पल डायरेक्टली. लेट मी सी इफ वी हैव वी डोंट हैव एन एग्जाम्पल इन द स्लाइड्स. सो लेट्स सपोज let's suppose let's suppose um, let's suppose we are conducting an experiment. ठीक है. और and let's suppose this is t this is t unknown that we want to measure, and let's suppose it's a k-type thermocouple. K-type. ठीक है. If it's a k-type thermocouple, then one of the material is chromel, the other one is elemental. ठीक है. No, let's not use the k-type thermocouple, क्योंकि हर एक thermocouple का अपना थर्मोकपल टेबल होगा. चूंकि हमारे पास इस वक्त स्लाइड्स में सिर्फ जे टाइप थर्मोकपल टेबल मौजूद है, सो आई विल यूज जे टाइप थर्मोकपल. ठीक है. And let's suppose this temperature this is unknown temperature. I'm trying to make an example for you right now. Okay. So let's suppose this is at some temperature t is equal to 20. हम चूंकि minus territory में, so let's make it t is equal to -10. This is an unknown temperature. ठीक है. And let's suppose this is our voltage. ठीक है. And let's suppose this is another thermocouple. Let's call it, okay. So this is V1, this is V mirrored, this is V2. चलिए हम इस तरह से कर लेते हैं, या चलिए इसे हम V2 कह देते हैं, and this is V3. ठीक है. and this is 0 degree C. अच्छा, कहने का मेरा मतलब ये है, and I'll explain in detail. देखें, आपका ये जो टेबल बना हुआ है, टेबल में जितनी वोल्टेज की वैल्यू है, this is for the given condition that your reference junction is at 0 degree C. ठीक है. अगर आपका रेफरेंस जंक्शन किसी और टेम्परेचर पे है, इट्स अदर देन 0 डिग्री सी. ठीक है. आपने आइस बात में रेफरेंस जंक्शन को नहीं रखा, आपने किसी और टेम्परेचर में रखा हुआ है. ठीक है. और वो टेम्परेचर नोन है. If that temperature is known, then how would you use this table? ठीक है. उसके लिए तरीकेकार क्या है कि आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, which is the law of successive temperatures. ठीक है. which is that V3 is equal to V1 plus V2. ठीक है. So even though अब जो V2 की इंटरप्रिटेशन जो है वो आप इसमें करेंगे. वो कैसे होगा? चलिए हमने वही एग्जांपल लेते हैं. जैसे T हमारा रेफरेंस टेम्परेचर मिसाल के तौर पे -10 पे है. ठीक है. सो अगर रेफरेंस टेम्परेचर -10 पे है और वोल्टेज मेरे पास जो आ जाती है वो लेट्स सपोज V2 जो है वो मेरे पास आ जाती है, बल्कि इवन हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, फार्मूला तो वही है, लेकिन लेट्स यूज दिस थिंग. ठीक है. हमारे पास T रेफरेंस जो है -10 डिग्री सी पे, T अननोन हमें नहीं पता, और हमारे पास वोल्टेज आ जाती है मिसाल के तौर पे 3 वोल्ट, -3 वोल्ट. दिस इज -3 वोल्ट.
So how do we figure out, क्योंकि ये टेबल जो है ये तो उसके लिए बनी हुई है, 0 degree reference temperature के लिए बनी हुई है. So we cannot directly use -3 volt directly here. ठीक है, क्योंकि ये टेबल, this table is for a thermocouple with a reference junction at 0 degree C. जबकि हमारे केस में हमारा जो reference junction है वो तो -10 degree C पे है. So we cannot directly use this table. ठीक है, so उसके लिए हम क्या करेंगे? What we will do is we will first find out. जी, question. सर ये जो लेफ्ट साइड पे सर ये टेम्परेचर नहीं हमें गिवन 0 -10 -30 नहीं, ये तो मेजरमेंट जंक्शन का टेम्परेचर है. रेफरेंस जंक्शन का टेम्परेचर तो गिवन नहीं है ना. रेफरेंस जंक्शन का अंडरस्टूड है कि वो 0 डिग्री सी पे. राइट सर. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? सो व्हाट आई विल डू इन माय ओन माइंड, आई विल क्रिएट दिस थर्मोकपल सर्किट. ठीक है, एंड और इसको मैं 0 डिग्री सी रेफरेंस पे ले लूंगा. ठीक है, नाउ अब -10 के लिए वोल्टेज कितना? -10 डिग्री सी के लिए यहां पर V1 की वैल्यू क्या होगी? सर -0.501. हाँ, -10 के लिए ये वैल्यू होगी. ठीक है, सो V1 विल बी इक्वल टू -0.501 वैल्यू होगी. ठीक है, V1 की वैल्यू ये होगी. ठीक है, अब अगर मेरा थर्मोकपल जिसका रेफरेंस 0 पे होता और दूसरा जंक्शन जो है अननोन टेम्परेचर पे होता, तो उसके वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? V3 की वैल्यू क्या होगी? सो वी नो दैट V3, हाँ, 3.501. V1 plus V2 होगी, which will be equal to -0.501 और -3 और -3.501 वैल्यू होगी. ठीक है ना? अब now I can use this value in the table. ठीक है, क्योंकि अब तो मेरा रेफरेंस, अब जो हमारा थर्ड थर्मोकपल है, थर्ड थर्मोकपल का रेफरेंस जंक्शन 0 डिग्री सी पे है और मेजरमेंट जंक्शन जो है वो अननोन टेम्परेचर पे है. सो थर्ड थर्मोकपल जो वोल्टेज एक्सपीरियंस करेगा, हाइपोथेटिकल थर्ड थर्मोकपल है, इट विल बी -3.501 वोल्ट. ठीक है, अब -3.501 वोल्ट इस टेबल में आप तलाश करें कहां पे मौजूद है. -7 के एंड, -7 के एंड पे वो 0 डिग्री, 0 से आगे, 0 की लाइन में -7 के नीचे सर ये -3 और -0.351. -70 में और सर वहां पे 3 और 4 में -3 और -4 कॉलम्स में. ये यहां पे आ रहा है ना. यस सर. ठीक है, इन दो वैल्यूज के दरमियान आ रहा है. ठीक है, so this value correspond to -71, -72, sorry, this value correspond to -70, this value correspond to -71, this value correspond to -72. This, our value exists between -72, -73 and -74 degree C. ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे अगर आपने एग्जैक्टली मालूम करना है? इंटरपोलेशन. बिल्कुल सही. So your unknown temperature T unknown will be something -73 point something based on interpolation degree C. Clear? Yes sir. Any question? देखें अगर हमारे पास ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोकपल ना होता ना, if we did not have a law of successive or intermediate temperature,
तो फिर हमारे लिए मसला होता। हमारे लिए हर रेफरेंस टेम्परेचर के लिए एक अलहदा टेबल होती, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए अलहदा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए अलहदा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए अलहदा, 10 डिग्री के लिए अलहदा, -50 डिग्री सेंटीग्रेड रेफरेंस टेम्परेचर के लिए अलहदा। ठीक है, तो दैट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल to use a table. Rather, we'll have to solve the equation of thermocouple, which is a tedious work. Okay? But because of law of successive temperatures, we can use that law effectively to use a single reference temperature thermocouple table for any reference temperature value usage of the thermocouple. Clear ये बात? Yes, sir. Questions, students? सर हमारे पास जो ये V2 की वैल्यू है -3 वोल्ट, ये हमने कहाँ से फाइंड? सर हाँ, ये -3 वोल्ट जो है, ये मैंने कहा था कि अगर हम ये जो है ना, ये हमने एक्सपेरिमेंट से, ये तो मैंने कहा था कि लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट ना, हम ये एक जंक्शन 0 -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं और एक जंक्शन T अननोन जो है वो हम किसी अननोन टेम्परेचर पे रखते हैं और हम फिर वोल्ट मीटर की मदद से V2 की वैल्यू मालूम करते हैं। तो हमारे पास V2 की वैल्यू तो आ गई है एक्सपेरिमेंट से, लेकिन उस वैल्यू से अननोन टेम्परेचर कैसे मालूम करेंगे, वो प्रोसीजर अभी हमने किया। ठीक है सर, ये समझ आ गया। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट? सर ये रेफरेंस जब हम टेम्परेचर ये सर 0 पे लिए सर, जो हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम था उस पे रेफरेंस टेम्परेचर 0 पे नहीं था, उसमें रेफरेंस टेम्परेचर जो था वो -10 पे था, 10 डिग्री सी पे था। अब चूंकि रेफरेंस टेम्परेचर -10 पे है और ये टेबल जो है उस थर्मोकपल के लिए, उस जे टाइप थर्मोकपल के लिए है जिसका रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सी पे है, तो हम इस सिचुएशन में ये वाली टेबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये सारा लॉ ऑफ सक्सेसिव टेम्परेचर को यूज करके, मैंने ये सारा जो प्रोसेस किया है उसको यूज करके फिर हम इस सिचुएशन के लिए इस टेबल को यूज कर सकते हैं। डज इट मेक सेंस? ओके सर सही। ठीक है, रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लें। देखिए सारा आइडिया क्या है कि अगर तो मेरा थर्मोकपल जो मैं अननोन टेम्परेचर के लिए यूज कर रहा हूं, अगर उसका रेफरेंस जंक्शन 0 डिग्री सी पे होता तो फिर मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मैं डायरेक्ट वोल्ट मीटर से जो मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाती, वो डायरेक्टली मैं इस टेबल में डाल देता। -3 वोल्ट देखने कहां पे, समवेयर हियर इन दो वैल्यू के दरमियान, और मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू आ जाती। ठीक है, लेकिन चूंकि मेरा रेफरेंस फॉर वट एवर रीजन, यहां पे तो मैंने एज्यूम किया है ना, फॉर वट एवर रीजन माई रेफरेंस टेम्परेचर वॉज नॉट एट 0 डिग्री सी बट रादर एट -10 डिग्री सी पे था। अब हम डायरेक्टली ये वाला टेबल यूज नहीं कर सकते इस एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, आपने इस एग्जाम्पल को कन्वर्ट करना है सो दैट योर रेफरेंस टेम्परेचर इज 0 डिग्री सी, जो थोड़ी देर पहले मैंने जो सारा प्रोसीजर किया था। क्लियर है? ओके सर सही है। ठीक है, सर ये हमें जो है मार्केट में जो मिलते हैं थर्मोकपल, इसमें TR हमें गिवन होगा? हाँ, जो आपके पास मार्केट में मिलते हैं ना, उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। आप इवन कारखानों बाजार से भी ले सकते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल सप्लायर्स के पास होते हैं, ज्यादातर के टाइप थर्मोकपल्स ही होते हैं उनके पास, और भी हो सकते हैं। थर्मोकपल आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। डायरेक्टली यूज करना काफी टीडियस है। अक्सर थर्मोकपल के साथ अपना रीडर आता है। ठीक है, तो आजकल अगर आप देख लें तो उसमें कोई डिजिटल रीडर होगा। थर्मोकपल आप उसमें उसका एक एंड जो है उस रीडर में आप प्लग इन करेंगे तो वो रीडर आपको खुद टेम्परेचर मेजर करके दे, मतलब एक डिस्प्ले करके दे देगा टेम्परेचर। इंटरनली इट टेक केयर्स ऑफ all those things. It take cares of the cold junction
it take care of using this table or the equation, it take care of all those things. आप क्या करते हैं कि आप एक थर्मोकपल लेते हैं और आपके पास थर्मोकपल रीडर होता है, उस रीडर में आप प्लग इन कर देते हैं थर्मोकपल को, उसके जो मेयरिंग जंक्शन होता है आप वहां पर अटैच कर देते हैं जिसका टेम्परेचर आप मेयर करना चाहते हैं, और रीडर पे आपके पास टेम्परेचर में वैल्यू आ जाती है। अब आप कहेंगे कि सर अगर रीडर में वैल्यू है तो फिर हम ये सारा कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आपने कोई इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजाइन करना है, अब उसमें आप रेडीमेड रीडर यूज नहीं कर सकते, आपने उसके लिए खुद सर्किट डिजाइन करना है या आपने उसके लिए खुद माइक्रो कंट्रोलर के साथ उसको कनेक्ट करना है। इन दैट केस जो है आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो अभी आपने पढ़ी है, यू विल नीड दैट इंफॉर्मेशन। या अगर आपके पास रीडर मौजूद नहीं है, ठीक है, यू ओनली हैव ए वोल्ट मीटर, आपके पास सिंपल एक वोल्ट मीटर मौजूद है, रीडर नहीं है, आपने उस वोल्ट मीटर से वोल्टेज की वैल्यू लेके आपने उसको कन्वर्ट करना है टेम्परेचर में, देन यू विल यूज दिस इंफॉर्मेशन। राइट, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ थर्मोपाइल? थोड़ा सा ये 2-3 शॉर्ट स्लाइड्स हैं और जल्दी से मैं आपके सामने रीड करूंगा और देन आई विल क्विकली गो ओवर देम। Thermopile. A thermopile is a term used to describe a multiple junction thermocouple circuit that is designed to amplify the output of the circuit. तो देखें, मटेरियल A और B, फिर B के साथ दोबारा A, फिर A के साथ दोबारा B, फिर B के साथ दोबारा A, फिर, ठीक है। सो यू हैव मल्टीपल जंक्शन। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप देखें, अगर आप कंसिडर करें टू अंडरस्टैंड थर्मोकपल कॉम्बिनेशन, इमेजिन थर्मोकपल लाइक ए डीसी बैटरी, जो सिंपल डबल ए साइज बैटरी नहीं होती जो कि हम गाड़ी खिलौनों में यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं, ठीक है। इमेजिन थर्मोकपल लाइक ए voltage source. It is a voltage source. Imagine it like a battery. ठीक है, तो अगर आप एक बैटरी से, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 1.5 वोल्ट आउटपुट आ रहा है और आप 2 बैटरीज को सीरीज में लगा लें, तो आपका वोल्टेज आउटपुट जो है वो डबल हो जाएगा। अगर आप 3 बैटरी को लगा लें तो ट्रिपल हो जाएगा, अगर आप 10 बैटरीज को लगा लें तो 10 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर आप देख लें कि अगर आपने स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करना है, then you need to have a high sensitivity thermocouple instrument. अब एक thermocouple जो है can only give you small voltage output. If you want to amplify the output of the thermocouple for the same temperature, then one of the option is to use multiple thermocouples in series configuration like this. ठीक है, in series configuration to amplify the output of the thermocouple for the same temperature. Clear है यहाँ तक student? Yes, sir. A thermopile is a term to describe a multiple junction thermocouple circuit that is designed to amplify the output of the circuit. Thermopile output signal is n times the single thermocouple output, where n is the number of measuring junctions. ठीक है। Average output voltage corresponds to average temperature level sensed by n junction. The transient measurement, in transient measurement, a thermopile may have more limited frequency range than a single thermocouple due to its increased thermal capacitance. ठीक है, let me explain those things. ठीक है, sensitivity to improve हो जाएगी, ठीक है, लेकिन एक problem, there will be a problem. अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 3 measuring junctions हैं, if let's suppose if we have 3 measuring junctions, अब 3 measuring junctions को अगर मैं एक प्लेट के ऊपर रख दूं और जाहिर है प्लेट का जो टेम्परेचर है, if it is not totally uniform, in most real life cases there might be some variation of temperature in the plate. There is a high probability that there will be variation of temperature in the plate. तो फिर हर एक जंक्शन जो है slightly different temperature सेंस करेंगे,
ठीक है. In this particular configuration, जो आपके पास measurement आएगी, it will correspond to an average value of the temperatures, ठीक है, rather than any single value. It will not correspond to T1, it will not correspond to T2, it will not be equal to or correspond to T3. It will be actually an average value of the three temperatures. ठीक है, इस बात की समझ आ रही है students? जी सर. And actually, this is very interesting phenomena. We can use this phenomena for something else. आप लोगों ने thermodynamics में uniform temperature की assumption पढ़ी है. Assume that the temperature is uniform. Students? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है. Thermodynamics में आपने पढ़ा होगा कि we assume that the temperature is uniform. ठीक है. You can test your assumption of uniformity of a certain surface, uniformity of temperature of a certain surface using thermocouple circuits. कैसे? Let's do it like this. Let's come here. Like in this circuit, in this particular circuit, shows a series arrangement of thermocouple junction designed to measure the average temperature difference between the junction. This thermocouple circuit could also be used to measure deviation from the uniform temperature assumption. In that case, any voltage output indicate that the temperature difference exists between two of the thermocouple junctions. Alternatively, junction 1, 2, up to n could be located at one physical location, while junction 1 prime, 2 prime, and n prime could be located at another physical junction. Such a circuit might be used to measure the heat flux through the solid. Let's talk about the uniform temperature configuration. Again, this is your reference junction. ठीक है, sorry. अच्छा. Now, in the previous case, in the previous figure, all of those reference junctions were at reference temperature, let's suppose 0 degrees C. In this next case, ठीक है, this and this, both of them are measuring junction. Here we have the two reference junction. This and this is measuring junction, this and this is measuring junction, this and this is measuring junction. Now, imagine, actually, oh, okay, because these are copper. Okay. So these are our reference junctions. These are our second set of reference junction, and I'll explain why do we have them. But this is our, forget about this part for now. This is our reference junction, this is measurement junction. This is reference junction, this is measurement junction. This is reference junction, this is measurement. This is reference junction, this is measurement. It doesn't matter. But let's suppose all the temperatures are the same. T1, 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 T1. If all the temperatures are the same, that means that the surface on which this thermopile is placed, or this combination thermocouple circuit is placed, has same temperature or uniform temperature. ठीक है? If all the junctions have same temperature, what will be the voltage output? What will be the voltage output of this circuit configuration? क्या होगा अगर तमाम जंक्शन सेम टेम्परेचर पे? 0 सर. 0 पे होगा. लेकिन अगर ये प्लेट जो है यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे नहीं है, ठीक है, यहां पर तो T1 है, यहां पर भी T1 है, लेकिन यहां पर T2 है, यहां पर T3 है, यहां पर T1 है, यहां पर T1 है. In that case, some of the junctions are at the same temperature, other junctions are at different temperature. तो आपके voltage output पे value 0 होगी या कुछ और value होगी?
जीरो के अलावा सर जी कोई वैल्यू होगी सर, 0 के अलावा कुछ वैल्यू होगी। नाउ उस वैल्यू की इंटरप्रिटेशन, और उससे हम ये मालूम नहीं कर सकते ये जंक्शन किस टेम्परेचर पे, ये जंक्शन किस टेम्परेचर पे, ये किस पे, हम इंडिविजुअल जंक्शन के टेम्परेचर की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंफर्मिंग our assumption of uniform temperature. अगर मैं एक experiment perform कर रहा हूं and I assume or I want to check if that certain surface is at uniform temperature or not, what I can do is take a series thermocouple circuit and place the different junctions of the thermocouple circuit at different points on the surface whose uniform temperature assumption I want to verify. ठीक है? If the voltmeter shows some voltage, that means that the uniform temperature assumption is not valid. If the voltmeter shows zero voltage, then that means that my assumption of uniform temperature for the whole surface is valid. Clear है यहाँ तक students? यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि इग्नोर दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। Okay, now here's the why do we have those things here? Sorry, not those things, just this and this. To understand that, let's take a simple circuit. Let's make it iron and aluminum. ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान मेरे पास कॉपर की वायर यूज करके, वोल्टमीटर के अंदर भी तो कॉपर होता है ना, इसके अंदर भी कॉपर कॉइल है, ठीक है, एंड आई यूज ए वोल्टमीटर, ठीक है। नाउ इफ यू सी, this becomes a series junction. So this, by introducing a voltmeter for the measurement of voltage across the thermocouple, this is junction 1, this is junction 2, but we have now introduced junction 3 and junction 4. Okay? Now that makes our problem confusing and complex, but we can make our problem simple by keeping these two junction temperature constant. Okay? Just keep these two junction temperature to be the same. So let's suppose if this is T1, this is T2, and these two are at T3. So junction 3 and junction 4 are both at T3. Since junction 3 and junction 4 are at same temperature, there is no temperature difference between the two junctions, even though the material are different, because this is aluminum, this is copper, this is aluminum, this is copper. Even though the materials are different, but since the temperature for the junction 3 and 4 made out of different material is same, therefore the voltage contribution by these two junctions is 0. समझ आ रही है इस बात की? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? So that's why in this circuit, because this is a thermocouple wire, so it might be aluminum or chromal or some thermocouple material, and this is also maybe constantan, aluminum or chromal, some material. Now if I try to connect my copper voltmeter wires with this thermocouple directly, it will create another junction, another two junction. And if there is any temperature difference between these two junctions will then contribute some delta V. Okay? If I want to ignore these two junctions, what I can do,
I can keep these two junctions at constant temperature of 0 degree by putting them in ice bath, and this will ensure that the voltage contribution of these two junctions is 0 in the thermocouple measurement. Clear ये बात students? Students? Yes, sir. अच्छा सर ये तो ठीक है, मतलब हम ये लगाते क्यों है सर? इसकी तो मतलब कोई वजह होनी चाहिए कि हम ये क्यों लगाते हैं। अगर ये ना भी लगाए तब भी हमारे पास, हमें पता होगा कि जो हमने वोल्टेज फाइंड किया है वो जो जितने थर्मोकपल है 3 है 4 है उसी के ये मतलब वोल्टेज है, पर हम ये आइस नहीं बात क्यों नहीं नहीं लगाते नहीं हैं? नहीं, देखिए आप यूनिफॉर्मिटी के लिए यूज कर रहे हैं ना, ठीक है, आप यूनिफॉर्मिटी के लिए यूज कर रहे हैं। अब आपके पास वोल्टेज 0 आएगा अगर ये तमाम पॉइंट सेम टेम्परेचर पे, यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे, तो वोल्टेज 0 आएगा ना, ठीक है। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा वो अपना माइक ऑन कर, ठीक है, 0 वोल्ट आएगा। अब एज्यूम करें कि ये प्लेट तो यूनिफॉर्म है, वोल्टेज 0 होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो थर्मोकपल मटेरियल है और कॉपर का जंक्शन जो है वो 5 डिग्री सी पे, और ये जो थर्मोकपल और कॉपर का जो जंक्शन बन रहा है प्लेट से बाहर वो जो है 6 डिग्री सी पे। अब इन दो जंक्शंस की वजह से कुछ वोल्टेज कंट्रीब्यूशन तो होगी ना, सो 0 प्लस में भी जी सर। आपके पास 0.5 वोल्ट आ जाएगा। अब आपके वोल्टेज आउटपुट जो है यहां पर वोल्ट मीटर पे आपके पास 0.5 वोल्ट आएगा। अब 0.5 वोल्ट से आप क्या मतलब लेंगे कि ये प्लेट जो है यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे नहीं है, क्योंकि आपके पास वोल्टेज नहीं आउटपुट आ रहा है, लेकिन ये वोल्टेज आउटपुट नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से नहीं आ रही, बल्कि यहां पर जो आप एक्स्ट्रा जंक्शन बना रहे हैं, क्योंकि आपका वोल्ट मीटर का जो मटेरियल है वो कॉपर है और जो थर्मोकपल के मटेरियल है वो कॉपर से डिफरेंट है, तो जहां पर वोल्ट मीटर आप थर्मोकपल से कनेक्ट करें वहां पर आपके पास एक्स्ट्रा जंक्शंस बन रहे हैं। ओके सर, ठीक है, सही है सर। अच्छा, लास्ट इज थर्मोकपल इन पैरेलल। ठीक है, व्हेन यू यूज थर्मोकपल इन पैरेलल, ठीक है, ये वही हिसाब है। देखें, बैटरीज आप सीरीज में भी यूज कर सकते हैं, बैटरीज आप पैरेलल में भी यूज करते हैं। व्हेन यू यूज बैटरीज इन सीरीज, जब आप सीरीज में बैटरीज यूज करते हैं, देन द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज ऑफ बैटरीज इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल बैटरीज वोल्टेज। अगर आप पैरेलल में यूज करते हैं, then the voltage across the parallel combination of batteries is equal to the average voltage of the batteries. ठीक है, so if we have a thermocouple, this is first thermocouple, material A, material B. This is second thermocouple, material A, material B. This is thermocouple, material A, material B, and so on. If you use those thermocouple in parallel configuration, then the output voltage of the parallel combination of thermocouples will be equal to the average voltage experienced by the measurement junctions. In this configuration, your measurement junctions are 1, 2, up to n, and your reference junctions, these are your reference junctions. These are reference junctions, and these are measurement junctions. So what is the utility of this circuit? Again, let's say you have a surface, a metal surface, and you want to, and you know that the temperature of this metal surface is non-uniform, that there is temperature variation on the surface of the plate. But you are not interested in temperature variation. You are not interested in temperature at each and every point. You want to find out the average temperature of this plate. If you want to do that, you will create this type of circuitry, and you will place junction 1 here, maybe junction 2 here, maybe junction 3 here, junction 4 here, junction 5 here, junction 6 here, junction 7 here, junction 8 here, junction 9 here. ठीक है? And then you will get the voltage output. Once you get the voltage output will correspond to the
average temperatures experienced by the 9 junctions of the parallel thermocouple circuit. Clear ये बात students? Questions? No, sir. ठीक है? So I'll do a summary of thermocouple. ठीक है? First of all, we studied what is the phenomena or the principle on which thermocouple temperature measurement device work, and it says Seebeck principle, and it's a thermoelectric phenomena. And then we studied how a thermocouple is made, what are the materials that are used, what are the different types of thermocouple, what are those thermocouple advantages or specific speciality. उसके बाद जो है we studied how to use thermocouple. We discussed reference junction, that we can have the reference junction at some known temperature or at some fixed temperature, or we can use another temperature measurement device to measure the temperature of a reference junction. Uske baad we discussed how can we convert the voltage output of a thermocouple into to find the unknown temperature. For that, we can either use the equation of thermocouple, polynomial equation of a thermocouple, or we can use the thermocouple table. But then we found out that the thermocouple table is only for a reference temperature of 0 degrees C, and if your thermocouple reference temperature is other than 0 degrees C, then we followed a procedure to use third law of thermocouple or law of intermediate temperatures of thermocouple to use the 0 degree C reference temperature table for any reference temperature value. After that, we discussed series and parallel configuration of thermocouple and utility of those configuration to finding to verifying uniform temperature assumptions, or to find the average temperature value of a surface. Any questions, students? Students? No, sir. No, sir. No, sir, please. ठीक है? Yes, sir. That covers your lecture. ठीक है? एक दो स्लाइड हो रहे हैं, ये आपने No, खुद sir. पढ़ लेने. That covers your temperature measurement lecture. पिछले so I'll stop recording.